a very peculiar case, and it's a case that is filled with mysterious paranormal phenomena and deep psychological trauma manifesting poltergeist activity. In fact, he used to skin cats alive and see them struggle. So he was the demon basically. She underwent such a traumatic experience about her assault that it did trigger RSPK. Welcome back everyone to another podcast. A lot of people have no idea कि ये podcast में हम actually करना क्या चाहते हैं या फिर कर क्या रहे हैं. Because जैसे कि कुछ people commented last time कि अरे तूने तो case पूरा पढ़ लिया करके. That's the whole idea actually, because the idea is हम एक particular case लें, उसको पूरा डिटेल में पढ़ें जो कि publicly available है, so that you are on the same page and then we start dissecting it. That's the whole idea of the podcast. इसलिए this is Ghost Encounters Unfiltered. हम सारी चीज़ों को unfilter करना चालू करते हैं जो कि मीडिया नहीं दिखाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है, मेन स्ट्रीम साइंस नहीं बिलीव करती है, एंड हम उसका एक पॉसिबिलिटी देते हैं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है. एंड दिस इज़ व्हाट घोस्ट एनकाउंटर्स अनफिल्टर्ड इज. इट्स अ पॉडकास्ट जिधर हम हर एक फेमस इनफेमस केस को लेके डाइसेक्ट करते हैं, हम उसके छितरे उड़ाते हैं बेसिकली. एंड आज भी हमारे पास एक केस है, बट बिफोर वी गेट इनटू द केस, हाय, माय नेम इज सरबजीत. This is Pooja. And this is Savio. And we are the investigators, demonologists, psychics, exorcists of the Ghost Encounters team, जिनको आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा. एंड अगर नहीं देखा है तो जाके देखो पहले. Especially our investigation videos, it takes a lot of time to investigate, edit and put it for presentation so that people understand कि हमारे साथ क्या हो रहा है या फिर चीज़ें कैसे क्या अनफोल्ड हुई. बट लाइक आई सेड, वी हैव एन इंटरेस्टिंग केस एंड आई रियली डाउट कि किसी को ज़्यादा आइडिया होगा कि क्या वो केस है. बट इरेस्पेक्टिव हम केस में कूदेंगे, एंड एज यूजुअल आई रीड आउट द एंटायर केस सो दैट देर इज़ नो मिस्टेक इन द नेम, द ईयर, द फैक्चुअल थिंग्स विच हैव एक्चुअली हैपेंड. एंड जो चीज़ें हो सकती थी या हुई होगी शायद नहीं बताया गया, वो हम आपको बताएंगे, है ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एमहर्स्ट poltergeist, एंड आवर मेन character's name is Esther Cox. And basically, it's a very peculiar case, and it's a case that is filled with mysterious paranormal phenomena and deep psychological trauma manifesting poltergeist activity. Now, Esther shared a house with her sister Olive. Olive was married to Daniel Teed and lived together with their two children, Esther's two siblings and Daniel's brother. A crowded home, to say the least. Although it had plenty of rooms, the house would at times become even more crowded as Olive and Daniel rented out some of the rooms for extra cash. It wasn't until after the attempted rape of Esther that the residents of the house began to see and hear strange phenomena. Esther had suffered minor cuts and bruises from the attack, but this was nothing compared to the psychological scarring it had left. And these were some deep scars. Shortly after the attack, she began developing severe fevers, which at times were accompanied by strong seizures. This was unusual for Esther, as she was always a healthy child. One night, Esther was getting in bed, a bed she would share with her sister Jenny. It was late at night and Olive and Daniel were in the living room, talking away into the night. A sudden deafening scream made them jump to their feet. Busting into the room, they encountered the terrified sisters cowering in the corner. Apparently, both were witnesses to strange movements underneath the blankets. The girls told how there seemed to be something crawling underneath the blankets. It was big enough to scare them out of the bed. Everyone assumed that it was a mouse that was trapped in the sheets, but thorough researchers revealed nothing. The same deafening scream was heard the following night. When Olive and Daniel burst into the room again, they saw an old box which was full of strips of fabric strewn across the floor. Apparently, there was a strange noise emanating from the box, a loud noise which had awakened the girls. When Esther reached underneath their bed to pull out the box, it jumped by itself and landed in the middle of the room. Taken aback, the girls saw the box take a second leap in the air and spilling its contents. The frightened girls were certain that something had tossed the box up in the air. It was the same thing that had been making the sounds from underneath the bed. By the third night in the chain of events, Esther decides to turn in for the night. She had been feeling a little under the weather that day and needed the rest. Hours after laying down, her sister also decides to turn in for the night. She gets in bed and within minutes, Esther jumps out of bed screaming bloody murder.
Jenny snaps out of drowsiness and finds Esther in the middle of the room, eyes bulging out and skin swollen and red hot. Esther is screaming, "Why is this happening to me? I'm dying." Esther is hit with a wave of convulsions that drop her to the floor. Again, Olive and Daniel come into the room and find Esther convulsing on the floor. While attempting to help her, four thunderous claps resonate throughout the house, shaking and rattling everything in it. Everyone is paralyzed with fear. Immediately after the sounds stopped, Esther stops shaking and falls into a deep, deep sleep. They all stand around the corner, confused and terrified. Esther's skin is returning to its regular color, and the swelling has stopped. Esther remains in the bed for the next 3 days, recuperating from the fever that had severely affected her a few nights ago. During this time, it was noted that no strange outbursts were seen or heard throughout the house. A day later, the exact same events occurred. The four thunderous claps that had once again made everyone jump. Confused and concerned, Olive and Daniel contacted Dr. Carrot, a local and trusted doctor. Upon his arrival, the events surrounding Esther began to escalate. Dr. Carrot made it to a point to document the case from the beginning. His first night there, he witnessed things that would be indicative of high strangeness. That night in the Teed residence, Dr. Carrot jotted down in his journal a strange incident in which Esther's pillow moved from underneath her head. Pulled by something that was invisible, Dr. Carrot mentioned that Esther's hands were in plain sight and that there was no visible form of trickery that could have moved the pillow from under the girl's head. As the night gets darker, so do the events. Dr. Carrot wrote down of loud sounds and banging emanating from underneath her bed. Again, checking for any signs of trickery, Dr. Carrot was at loss for an explanation. Moments later, he heard a sound which sounded to him like a metal piece scraping plaster. What he wrote down next changes the tone of the case. A few feet above Esther's bed on the plastered wall, he watched as letters began etching themselves. Forming letters that are foot long, the message was clear and ominous. Esther Cox, you are mine. While the doctor stands in disbelief, Esther lays motionless in deep sleep. The frightening ordeal wasn't enough to keep the doctor away. He returned the very next day only to fill his journal with all kinds of random unexplained events. Potatoes were hurled across the room by unseen hands, spontaneous fires erupting throughout the house, and even thunderous bangs had returned. This time they were heard coming from the roof of the house. As the day passed, the paranormal events continued. Knives and forks suddenly flew across the room at high speeds, jamming themselves into the walls at times. Lit matches were said to materialize out of thin air and land on the beds. Furniture was moved and tossed and around the house when no one was in the room. Oftentimes, heavy drawers slamming up against the walls. For Esther, the poltergeist activity turned from annoying to life-threatening. Witnesses claimed to have heard the sound of a heavy slap, only to see welts rising from Esther's face, turning her whole side of a cheek red in seconds. Something was now physically harming Esther. Feeling guilty, Esther decided to move out of the crowded house and into a more comfortable one by asking her eldest sister permission to move in. While staying miles away, no strange phenomena was reported at either location. It seemed that whatever was frightening the Teeds, it had vanished as quickly as it had manifested. After feeling that everything was okay, that everything had returned to normalcy, Esther Cox returns to Elmhurst. One Sunday, Esther decided to attend mass. Loud knocks and rappings kept interrupting the otherwise peaceful Sunday sermon. As the preacher attempted to continue his sermon over the noise, Esther began to feel more and more embarrassed. All eyes were on her. Everyone in the town knew about the strange goings-on inside the Teed house. Esther, trying to save face, gets up and excuses herself from the mass. Soon after, the noises ceased and the mass continued in peace. Esther's welcoming back into the Teed house was a bitter one. The activities continued and even escalated to a more sinister level. One of the neighbors had gone over to the Teeds to hang out. The neighbor, a young man, was playing with a pocket knife when it was suddenly ripped off his hands and flew straight into Esther's back, piercing its blade into her back. This was the last straw. The family knew that whatever this force was, it wanted Esther to itself. Just like the message the Dr. Carrot saw manifesting before him.
Esther moved out of the house since she believed that it was the source of her troubles and moved into a home of a friend of the family. Not long after moving in, the barn caught fire and was destroyed. The friend believed that Esther was behind the arson and had her arrested. Esther was convicted of arson and sentenced to 4 months in prison. She ended up serving only 30 days. After she was released from the prison, Esther's life returned to normal. The poltergeist seemed to have vanished for good. A great deal of what is known about the Esther Cox comes from the book An Amherst Mystery by Walter Hubble. And this was the mysterious case of the Amherst poltergeist. It's long, dude. So many things. पानी आ गया आंखों में मेरे तो. Nice story. लेकिन जब भी पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटी होती है और कोई लड़की इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है RSPK पे. हाँ, it's रिकरेंट so obvious हो जाता है ना. स्पॉन्टेनियस साइकोकाइनेसिस. सो ऑब्वियस हो जाता है ना, क्योंकि एक बार क्या हमने कितनी बार देख लिया है अभी तो यही हमारे पॉडकास्ट में कि जब Exactly. देयर इज a girl who is in her teenage, most probably, or otherwise also, हाँ. and there are activities around her, RSPK होता है, but then again every time हम लोग ये टॉपिक करते हैं, बार बार घूम के मेरा एक ही क्वेश्चन है जो कि अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला, and could be a possibility or could be otherwise, कि क्या RSPK में इतना कुछ हो सकता है. मुझे एक्चुअली RSPK पे और डीप रिसर्च करना है. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि अगर हम ह्यूमन माइंड लें या फिर एज ह्यूमन बीइंग्स, the kind of energy that we hold is unfathomable. As in, अगर हम बोलते हैं we are multi-dimensional beings, the entire universe is within us. The power that we have is insane. And वो चीज़ जो इंसान ने अगर चैनल कर ली ना, that person can create magic. But at the same time, if it is not contained or if they are not able to channel it the right way, it can be disastrous. हाँ, understood and noted. But then जैसे कि the one thing that actually kind of was like मतलब जैसे कि वो उसका neighbor was playing with a knife and it suddenly flew from his hand and I know what? it flew from his hand and it hurt him and then it hurt her. वो चीज़ मेरे दिमाग में क्या आई? Supernatural. You remember? You've seen Supernatural? नहीं देखा है ना? You remember Jack? Jack his name was, right? So The Jack, Nephilim. the Nephilim, Jack, उसमें Nephilim दिखाया गया है, which is a combination of a human and a fallen angel, a hybrid. When he realizes his powers or when he is getting tuned to his powers, remember he had gone for a I party know. जहाँ पर वो Yeah, I सब remember. लड़कियाँ थी and he couldn't contain the power that he had, and without his wanting to hurt the other girl, she gets slashed by. हाँ. So it is the same thing when you are not able to handle the power, and ये सब involuntary actions होते हैं, just like the idiomotor effect. हाँ, समझा वो. But you know what? I'm thinking कि after so many podcasts and like just not to sound ignorant, what if everything we have been debunking exactly वैसे ही हुआ था and there was actually something paranormal. ये podcast फालतू में कर रहे हैं हम लोग. But you know, like, that's what. This is one of the angles. This is like Of one course. of the angles. And well, because we are doing so many podcasts जहाँ पर RSPK हम लोग discuss कर रहे हैं, I actually want to get into the depth of कि किस extent तक इसकी इसका effect जा सकता है. Also, another thing is we have to see here is, just for example, lot of things are happening in there apart from multiple witnesses for one thing. Second thing that doctor saying कि ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ करके, for some reason साल नहीं mention हुआ है कि कौन से साल में ये हुआ था. है कौन सा year? Hey, because that's what exactly I was looking at, and this happened during the years 1879 Okay, to again. 1880. तो 1878 से शुरू होके this poltergeist activity stopped in 1879 or 1880, right? And why I was actually looking at this is एक because साल में खत्म हो गया वो. James Watt invented the light bulb in 1880, and Canada, where this is occurring, वहाँ पर commercial electricity started only in 1881. So we are talking about
कैंडल लाइट्स Yeah. एंड टॉर्चेस ओवर हियर. यहाँ पर Lanterns इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, नहीं थे, तो correct. यहाँ पर लैंटर्न वगैरह सब थे. तो कैंडल घिर के या कुछ और यहाँ वहाँ होके मैचेस अपने आप ये होके कुछ भी हो सकता था. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्क टाइम्स जहाँ yeah. पर इट वॉज कम्प्लीटली डार्क. तो शाम हो गई, लाइक 6:30-7 बज गए. उसके बाद पिच डार्कनेस, उसके बाद सिर्फ मोमबत्तियां सब जगह पे, राइट. एंड हाउ यू precariously balanced it here, there, everywhere. If people have stayed in their old village houses wherein there has been no lights will know this. So गांव में जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जगह जगह पे हम मोमबत्तियां लगाते हैं, वो लैंटर्न्स लगाते हैं, वो कांच के इसमें, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टाइम्स ओवर हियर. सो 1878 1879 की आसपास में ये हुआ है, these things. I see this RSPK as a good this, but I see this as a very practical or very practical way. I mean, the version of RSPK, because ये थी वो टाइम पे 16 to 19. 19 के उम्र में उसको बोला गया था कि there was that attempted sexual assault, जो it did not materialize. वो बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? बॉब मैकलीन, राइट. उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ही वॉज अ वेरी रफ एंड वेरी साइकोपैथिक गाय. ही वॉज ऑलवेज वेरी रूड टू पीपल. इन फैक्ट ही यूज्ड टू स्किन कैट्स अलाइव एंड सी देम स्ट्रगल. So he was the demon basically. ही वॉज लाइक अ डीमन, ही वॉज अ डीमोनिक दिस. अब एक बात बोलो, ये लड़का और ये लड़की एस्थर and Bob were very good friends. She had no other friends in the village. That is what is written about her. She was friends to only this person. मतलब थोड़ा क्रेज तो इसमें भी होगा ना, राइट. अब इसने अटेम्प्ट किया, he attempted sexual assault on her using a knife. That means without the knife also he might have tried to seduce her. जब उसने ना बोला तो ही तब उसने नाइफ निकाली. उस डायरेक्टली अपने बेस्ट फ्रेंड को सीधा हाँ नहीं करेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो सेडिस्टिक, शी इज ऑल्सो, दोनों भी क्रेजी हैं. सो जब उसने वो किया और जब एक दूसरा वैगन आ रहा था कहीं से, तो हॉर्स कार्ट और वैगन, वो टाइम पे उसने घुमा के फिर से घर पे छोड़ दिया. ही डिडंट अबैंडन हर ओवर देयर. उसने फिर से बाई जेट उसको घर पे रखा, छोड़ दिया. सो आई सी दैट दीज बोथ आर ऑल कनेक्टेड. उसके बाद उनका जो भी ब्रेकअप वगैरह हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ द डिनायल एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसके बाद से ये पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई. एंड वही ट्रिगर भी कर सकता है RSPK. हाँ एग्जैक्टली. बिकॉज इफ यू जब तू रीड कर रहा था ना, उसमें आई थिंक द सेकेंड और द थर्ड लाइन वाज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लीडिंग टू पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज. एग्जैक्टली, यप, है ना. सो शी अंडरवेंट सच अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अबाउट हर assault that it did trigger RSPK. और शी सिमुलेटेड द RSPK. एग्जैक्टली. कि उसका अटेंशन पुल करना है. जैसे कि आजकल के स्ट्रीट साइड मजनू होते हैं कि लड़की ने ना बोला नहीं कि यहाँ पर नस काटना, खून से अपना नाम लिखना, that stupidity that they do just to pull attention. Right. You're not in my life, so I'll go and do everything like that. Probably this was a feminine version of that. Feminine version. Because she was convicted of arson. Yeah. So that shows that she. Yeah. मतलब कुछ तो proof उनको मिला था, otherwise why would they convict of arson? Otherwise, unless it's almost that period of the time of witch hunting. And क्योंकि फायर वगैरह सब कुछ अराउंड हो रहा था, she was anyway blamed and tagged as a witch and everything. But she wasn't burnt at this stage. No, उसको she wasn't. properly by just convict किया गया था. Yeah, because majorly the witch trial started around 1400-ish and they went on to 1700-ish. At the most. But उसके बाद भी होते थे, but they were not like कि जैसे Salem witch trial हो गया, वैसे नहीं होता था. But females were heavily, kind of suppressed and everything. वो सब होता था. नहीं, what I'm trying to put here is कि वेरी गुड एंगल्स बाय साइबर भैया कि अगर उसको कन्विक्ट किया गया था, प्लस अगर ये बताया जा रहा है कि आउट ऑफ सो मेनी पीपल एंड एवरीथिंग she was friend with this guy who is a clear psychopath, sociopath for that matter too, कि वो cats को alive skin कर रहा है, मतलब उसका mindset बता रहा है. Exactly. And if you are friends, मतलब there is something that आप दोनों में vibrate हो रहा है साथ में, is why you are together, friends or otherwise. That also shows that इसमें भी probably Esther too had some kind of thing. And the first ghost that affected her, the original ghost, का नाम क्या था? बॉब निकल. हाँ. यहाँ पर बॉब मैकलीन है, यहाँ पर बॉब निकल है. Yeah.
So it's not a very straight case कि Yeah. हाँ ये है, because we're talking about the dark ages. Like I mean Yeah, yeah. that time की बात करें, dark ages as in I'm talking about before the electricity Right. and the advent Yes, of the yes, light bulb. yes. Right. बाकी सब जगह पे आने से पहले इंग्लैंड में I mean, आया, फिर आफ्टर अमेरिका में. Yeah. कनाडा इज वेरी फार अगे स्टिल. वो वहां पर आने से पहले रात को अंधेरे में बैठ के मैं यहाँ से अगर माचिस की तीली लेके ऐसा उड़ाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा. वो कहीं भी जाके वो अरे हाँ, अरे this has happened, like I remember जब and if she's having a boyfriend who can skin a cat alive, it's very easy for this girl to catch a bandicoot or a mouse, बॉक्स में पैक करके फेंक दो, वो बॉक्स अपने आप जाएगा. अपने आप जाएगा. नहीं, अपने and आप ये जाएगा. देखा भी है. फॉर एग्जाम्पल अपना एनफील्ड poltergeist case, a lot of those things were actually done by the girl. Yes. And again, मेरा ये मानना है कि without trying to put any blame on her, like you said, it was all involuntary. She has no idea she's doing those हो things. सकता है. It's like again बार the same example of Vidya Balan in Manjulika, in Bulbulaya. She doesn't remember that she just shouted on her husband. उसका ध्यान भी नहीं है, because the subconscious mind and the controlled information mind has taken over so much, क्योंकि consciousness कुछ realize ही नहीं कर रहा है कि मैं इतना कुछ कांड कर रही हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. It's like an amplified and an extended version of idiomotor effect. Idiomotor effect, yes. I guess she might have been possessed for all that I know, because localized था. जब Amherst में आए तो वो टाइम पे सब कुछ हो रहा था. When she was taken away from Amherst, everything नहीं हो रहा ceased. था. नहीं हो रहा था. कुछ नहीं हो रहा Because था. boyfriend ही नहीं है ना, तो किसको impress करूँ, कहाँ attention pull करूँ, फोन ही नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ है, नहीं there is no है. connection. No When she connection. comes back to Amherst, फिर से फिर से boyfriend चालू नजर हो आता है, फिर जाता से है. शुरू हो जाता है, और इतने हाइट तक चले जाता है कि she is convicted of arson. तभी जाके उसको बुद्धि खुल जाती है कि यार ये अति हो गया है. It is after that कि everything stopped and she got married twice. 2 बार शादी हुई उसकी, दोनों हस्बैंड से एक बच्चा है. Another theory, playing the devil's advocate, is when the assault happened on her, something got triggered in that land, in that area, and there's actually a real poltergeist that was haunting her. Because see, when sexual assault happened, it's very traumatizing. That trauma, when released to the environment, apart from RSPK, will also create a kind of very low vibration environment, like a battery for evil spirits and everything. Plus, let's say this Bob guy, I don't know, I'm just assuming right now, these are all speculations, कि this Bob guy, since he was, क्योंकि he lost his, because वो दोस्त था उसके साथ, and suddenly he had an urge to assault. इतने सालों में नहीं हो रहा था. Suddenly what triggered in him कि something, and he went to that extent, and for that matter वो उसके बाद उसको घर भी छोड़ के आ रहा है. What I'm trying to connect is कि because of his nature of being sadistic, sadist people are anyway very open for attachments, so Bob kind of got possessed for that particular moment, and you're like, whatever possessed him was like, okay, and I'm no way trying to speculate or assume that sexual assault, those who do are possessed by demons. No, this is only a theory explaining the girl's situation, not Bob's point of view, not the assaulter's point of view. I'm just trying to explain Esther's point of view, that he got possessed and he was like, today's the day I do whatever I want to do. And because he is driven by some other thoughts which is not his own, because भले वो sadistic है, भले वो बिल्लियों को मारे सब कुछ करे, but still for him Esther is his best friend. That's like one line no one will ever cross unless you're driven by some kind of thought. आपकी रूट चक्रा की लगी हुई है, मैं भी गाली देने वाला था, and you are like totally been driven by this entire thing, or you are possessed by a demon that is trying to exploit someone. In that case, what happened, he went on and he tried, like you said, initial normal ways of seducing, whatever, वो नहीं मानी, and then he was like, what, I'm raged right now, I'm in anger right now, I'll do whatever I have come here for, and वो knife निकालता है, and for some reason नहीं होता है, and maybe what happened then was, he fought back with the demon, and he got back into his conscience, no, this is wrong, I cannot do this to Esther, and he drops her back home, and he leaves. And that was actually like so traumatizing for her
मतलब वो तो लेटर की बात वो है। लेटर की बात Yeah, yeah. एंड वही मतलब कि इट मतलब दैट कैन इवन एक्सप्लेन कि वो जब उसको वहां से हटा दिया गया सो शी वाज फाइन बट देन Yeah. व्हेन शी वाज ब्रॉट बैक टू द सेम लैंड एवरीथिंग काइंड ऑफ triggered back The memories and everything. triggered back the memories Yeah. and started And the why Bob again? Because like Saviobi has said, the trauma lies with Bob, the boyfriend. yeah You know, when you're talking about that, I thought you would actually touch upon this point, but no, you stopped it where he actually uska वो knife वाला scene हुआ. You say that he got back in his consciousness and he got back again. मुझे ऐसा लगता है वहां से वो possess हुआ actually. मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जो भी Amherst का जो घर में हुआ वो ये कर रहा था. ये कर रहा था करके Possible. Again. another Because possibility. he could do anything. Yeah, वो yeah. अगर वो cat को पकड़ you know how difficult it is to catch a cat and freaking skin it. Exactly. मतलब कि क्या उसका माइंडसेट और उसमें क्या तो साइंस है ही कि वो तो बुला रहे इसलिए डीमन मेरे को पोजेस कर वैसा वाला ही सीन चल रहा था उसके साथ पूरा तो। ओपन Even if it is a kitten, I mean, the kitten will bite you, scratch you. हाँ, it So will do अगर वो अगर everything in its power. हाँ अगर एक तू cat को पकड़ के अगर उसको skin कर सकता है, so he could do a lot of other things and just throw it inside the window of these people's house. नहीं पता अंधेरा है चलेगा ना, अंधेरा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा. बिल्डिंग के बाहर 2 पेड़ हैं, वो पेड़ के ऊपर से बैठ के कोई फेंके किसी को दिखाई भी नहीं देगा. We are talking about a time when there are no street lamp. एग्जैक्टली. एंड लैंटर्न में कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं. वो सिर्फ उतने ही एरिया में, कुछ लाइक 1 नहीं. फीट एरिया में जो वो दिखेगा. डॉक्टर्स को वो शैडो वगैरह नजर आए या बेडशीट के नीचे कुछ मूव होते हुए दिखाई दिया. इट माइट हैव बीन एन एनिमल दैट्स पुट आउट डाउन देयर. Animal put out, and for all that matters, even for that thing, शायद एस्थर को भी पता नहीं है कि वो कर रहा है करके, पता नहीं. क्योंकि वो तो अपनी ट्रॉमा खुद हैंडल कर रही है बेचारी, वो क्या देखने वाली है और उसके आजू-बाजू क्या और जब उसको वहां से निकाला गया हाँ. तो ये भी शांत हो गया. शांत हो गया. हो गया. एग्जैक्टली. अब किसके साथ करेगा? अब क्या, और उसके शादी के बाद फिर वापस से शांत हो गया. What about the thing that and even जो लिखा भी गया है ना मिरर में, even that it's very much in sync to what we are theorizing. Esther Cox is mine. It's हाँ. like Bob freaking Macklin is saying she is mine. टू किल. To kill, और just कि ये मेरी हुई नहीं तो मेरी किसी की है. नहीं हुई. It's like ऑब्सेशन नो, वहां पर लिखा था एस्थर इज माइंड टू किल. okay. हाँ, टू किल लिखा हुआ था. टू किल था हाँ. But how do you think that वो कैसे लिखा अपने आप in the mirror or whatever? Mirror तो नहीं होगा. On the it wall, was the like wall. above her so probably on a wall or something Yeah, that is because if someone is मतलब like I don't have a theory for that कि वो कैसे हुआ. नहीं, उसने लिखा रहेगा wherever it is written. I mean, or the mirror and wherever for that matter. नहीं वो according to doctor it was the words were appearing in front of him. That is written by this author. Yeah. वही I Hubble. mean वो हबल जो भी है, वॉल्टर हबल, राइट? Yeah. ही इज रिटन इट. तो उसने बोला कि मेरे घर पे ऐसा हुआ, तो उसने बोला अच्छा तो ये भी लिख देता हूँ. Yeah. But even this was the case of, do you remember this Indian case that we did of the girl पिल्ले पिल्ले haunting. haunting. Pillai haunting में वही भी तो था. आरएसपी के था उसमें भी लिखा आ रहा था. उसमें भी लिख के आ रहा था करेक्ट on that, but बहुत उसमें बहुत similarities बट उसमें हैं क्या था, दोनों उसमें cases. क्या था कि उसमें हम लोगों ने क्या फिगर आउट किया था कि जो ऐसा वॉल था, वॉल के इस तरफ लिख के आ रहा था, एंड देयर वाज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर समवन टू जंप आउट ऑन द अदर वॉल एंड गो हाँ that was the 3/4 wall thing 3/4 कि आप वॉल आओ कोई भी लिखो कूद के जा सकता है. and एंड कूद वो के लिख जाओ. के आके हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि मे बी शी वाज कमिंग आउट, जंपिंग आउट, लिख रही थी एंड कूद के जा रही थी, एंड जो कोई आके देखेगा बोलेगा अरे क्या गालियां निकल रही कि अरे ये तो लिखा हुआ है करके कि ये तो लिखा हुआ है करके, यू नो. बट इधर क्या अलग है इज द इफ द डॉक्टर इज नॉट एग्जैजरेटिंग एंड द राइटर इज नॉट एग्जैजरेटिंग कि अपने आप कैसा हो. दिस इज द ओनली पॉइंट आई और थिंक. सिर्फ ये एक ही पॉइंट है बाकी वो Exactly. चीजें फोर्क एंड नाइफ्स का उड़ना Everything, या फिर ये everything. होना या फिर वो बॉक्स Everything का is आना RSPK. all that RSPK can and be planned. covered under this RSPK. thing, right? I mean, getting appearing on its own हाँ can be by chemical आई नो, मेरे को reactions. भी वो आया सबसे पहले. राइट, जैसे कि नींबू से अगर लिखो कुछ भी और Yeah, उसके yeah. नीचे अगर कैंडल रखो तो वो some करके chemical or होएगा. something like I that. know होएगा. But if I'm saying if nothing of this explanation fits the writing pointer, then this is the only thing that will debunk everything we said.
दिस इज द ओनली पॉइंट जो हम लोगों के सारे पॉइंट डिबंक कर देगा, बोलेगा कि नहीं दिस इज सिर्फ ये RSPK में फिट नहीं होता, बाकी सारे फिट होते I'll tell you one more other thing. I extensively read over this. Even I mean just last night मेरे को टाइम मिला पढ़ने के लिए, तो मैं last night पढ़ रहा था. वो जो स्टैबिंग वाला इंसिडेंट है ना, the knife automatically flew. It was not a neighbor. It was her brother-in-law's brother. ओके They were working together. कहीं तो एक कुछ किचनेट या कहाँ तो हम लोग काम कर रहे थे, एंड दे वर वर्किंग टुगेदर लाइक अ बार टेंडर, शी वाज लाइक अ वेट्रेस और समथिंग लाइक दैट. और व्हेन शी वाज टेंडिंग, वो पीछे खड़ा था और पीछे से स्टैब हुआ. और वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे हाथ से निकल के उसको स्टैब हुआ. हाँ, वो उड़ा करके, उड़ा बोल के. उड़ा. ऐसा हो सकता है कि इसने बोल दिया अभी बस हो गया इसका, राइट? ऑब्सेशन विद अ बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ऑब्सेशन विद हर. ऑलरेडी वी ऑलरेडी क्राउडेड इन द एंड सबके, हाँ, सबका इधर अटेंशन आ रहा है दैट शी इज अ विच और शी इज पोजेस्ड और समथिंग लाइक दैट. ही माइट हैव ट्राइड टू स्टैब हर, और कोई शक भी नहीं उड़ा खड़ा. नहीं, मतलब उसको उड़ाया गया. हाँ, उसने खुद ही मार दिया और बोल दिया कि यू नो व्हाट, कौन मानेगा इसकी बात, ये पागल की बात कौन मानेगा. आई एम स्टिल स्टक एट द टेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ना मेरे को और दूसरा थियोरी क्या आ रहा है कि लाइक यू सेड ना, जो केमिकल थिंग, लेकिन वी हैव टू कंसिडर कि लाइट्स तो थे नहीं, लैंटर्न्स वगैरह थे, सब कुछ थे. एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, एंड केमिस्ट्री हैज बहुत पहले से, केमिस्ट्री का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ. बहुत लोग हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिस्ट्री, अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर ऑलरेडी. एल्केमी था उससे पहले. Exactly. एल्केमी से बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होके फिर आफ्टरवर्ड्स वी गॉट इनटू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. केमिस्ट्री में सब कुछ हुआ. आई एम थिंकिंग व्हाट इफ द एंटायर थिंग दैट वाज रिटन वाज एक्चुअली ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ प्रोबेबली, जिसके ऊपर ऑलरेडी बॉब ने कुछ तो केमिकल से लिखा हुआ था, एंड ही न्यू कि एग्जैक्टली इसी टाइम पे, और जब डॉक्टर आएगा तब इट विल स्टार्ट अपीयरिंग. उसके पहले वो ब्लैंक स्लेट था, होता है यू नो, लाइक वो जो मैजिक पेन जैसे होता है कि आप लिखे ऐसा खाली दे दो, व्हेन यू बर्न और यूज यूवी लाइट, ओनली देन यू सी के क्या लिखा हुआ है. मैं वही बोल रहा हूँ. उसमें भी ना उसने कुछ तो लिख दिया था. एंड है यार, केमिकल्स तो अभी भी है, ये हैलोवीन डेकोरेशंस में यूज होता है. लेकिन उस टाइम पे ये सब चीजें वो थी, लाइक पीपल हैड एन आइडिया अबाउट. Why not? Why not? ज्यादा था. Like for example, मिथाइल ऑरेंज लेंगे, नाइफ पे डाल के आप नींबू काटोगे तो ऐसा लगेगा उसमें से खून निकल रहा है. हाँ, करेक्ट. साइट्रिक एसिड एंड मिथाइल ऑरेंज, बेसिक ट्रिक्स. नहीं, वही मैं बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एल्केमी, जब बिफोर इट गॉट सेपरेटेड टू ऑल दिस स्ट्रीमलाइंड सब्जेक्ट्स, वेरी पावरफुल जो लोग प्रैक्टिस करते थे. एंड हाँ, इवन विचक्राफ्ट वगैरह वाले जो दे यूज्ड, या for good and for bad. Yeah, For good and for bad. Even for that matter, this one fruit I'm forgetting, उसको अगर आप you know like ऐसे directly ऐसा घिस दो ना, पानी ऐसे लगेगा. But with time it will start forming that thing and दिखेगा कि अरे हाँ यहाँ पे फ्रूट लगा था करके. जो भी कमीने लोग ना इंडिया में वो कलर लेके होली खेलते हैं, उनको पता है कि वो दिखने में गुलाबी दिखता है और बाद में पूरा मुंह काला हो जाता है. पूरा सिल्वर. नहीं, काला नहीं, वो पूरा सिल्वर. काला भी हो जाता है और वो निकलने को टाइम लगता है. वो बिस्सो का जोक था ना, इनको कौन सा केमिस्ट्री पता है. हाँ, वो बिस्सो बोलता है ना कि तू पूरा मतलब मछली से एवोल्यूशन हो के तू इंसान बना, लेकिन अभी इंसान बनने के बाद ही फिर से तेरे को मछली बनना है सिल्वर होके. No, this is all possible because I mean you could take a magician's wire and then afterwards pull knives from anywhere, make things fall off, right? Snatch things off and just snap it. लेकिन मुझे करना है RSPK पे वही ना, because till what extent exactly the activities can go, because it's actually मतलब you know बहुत ज़्यादा डीप स्टडी है ये, एंड ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटीज कैपेसिटी है they have been untapped बहुत ज़्यादा. You know, it also makes me think कि जब हम लोग कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, हम क्या बोलते हैं क्लाइंट को कि आप वो रूम में बैठ जाओ लॉक करके, नहीं तो आप घर के बाहर चले जाओ, वो गार्डन में बैठ जाओ, लेट अस इन्वेस्टिगेट. क्या गारंटी है कि वो क्लाइंट बाहर बैठ के भी RSPK नहीं हो रहा है उधर? बिकॉज उसका तो अभी और ट्रिगर होएगा ना, बिकॉज शी इज ना मोर कॉन्शियस कि समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटी. एंड RSPK अभी तक मेरे ख्याल से इनवॉलेंट्री ही है, बिकॉज वॉलेंट्री RSPK विल बी खतरनाक, ह्यूज, खतरनाक. तो रियल मैजिशियन हो गया, मैजिशियन ही हो गया. तो नहीं, आई एम थिंकिंग दैट आल्सो ब्रिंग्स टू द पॉइंट कि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम को एक्चुअली कंक्लूड करना है कि पैरानॉर्मल है या नहीं है,
आई थिंक ह्यूमन माइंड तो है ही, साइकिक्स तो है ही, बट जस्ट टू प्रूव फॉर एग्जाम्पल इधर मैं सोच रहा था कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा आरएसपी का उसका चल रहा है घर पे, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम देखेंगे अरे लाइट गिर रहा है, चीज़ें उड़ रही हैं, नाइफ उड़ के जा रहा है, हम डॉज कर रहे हैं, हमारे लिए लाइक अरे ये तो क्रेजी है, बट देन हम EMF ट्राइफिल्ड निकाले एंड कुछ फ्लक्चुएट हो ही नहीं रहा, हाँ क्योंकि एंटिटी कुछ है ही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज कुछ हो ही नहीं रहा. So I think that's why at the end of the day it's very important that every single claim is debunked or explained through some gadget. Yeah. It's True. very important. True. right Whatever battery of gadgets we have, whatever जितना भी होने दो, कहीं ना कहीं It's तो very necessary. yeah, It's yeah. very necessary because unless and otherwise we do that, there's no way. It's like the way human mind is, like you said, it's capable of. क्या क्या कर सकता है नहीं पता यार. One more other point that why I say that either she was possessed or a boyfriend was possessed or something like that, because उनको जीने की एक तो पहली बात तो ट्रॉमा काफी हुआ था उसको, traumatized or whatever like that, कि जिससे मैं भरोसा कर रही हूँ, he attempted this. It's a very bad thing to happen actually, right? दूसरी बात है, she was diagnosed with diphtheria. डिप्थीरिया का मतलब है काली खांसी बोलते थे वो टाइम पे. काली खांसी का मतलब है आप मर It जाओगे. was a plague only. It was a plague. Whoever had diphtheria would die. So she thought that okay, fine, my end is near. तो क्यों ना थोड़ा, तो probably diphtheria had a Effect on our brain. perfect schizophrenic हुई. Possibility, yeah, schizophrenia is also a possibility, you know, and like I said, if nothing of this sort actually, you know, मतलब fits through the story and actually ऐसा नहीं हुआ था, then like we said, everything gets debunked to जो हमने बोला. And if not, then there are a lot of pointers to this and a lot of ways to. See, there are things to consider. One is Esther Cox, the main character. Second is the house wherein all these 6-7 people used to stay, right? And the third thing is the poltergeist. Yeah. So तीनों चीजों को सिर्फ एक ही साथ में अगर कनेक्ट करेंगे तो ही हो रहा था. Exactly. Where she went in a different house, it Yeah. didn't happen. Yeah. It didn't follow her wherever she went. So whatever poltergeist or whatever we're talking about was not following her Or not attached to her. or not No. attached to the even the house. नहीं था नहीं था. सॉरी वो घर के साथ अटैच था. घर सॉरी के और साथ किधर नहीं attached था. था. नहीं, not to घर her. के नहीं घर के साथ भी अटैच कैसे हो सकता है, बिकॉज अगर घर के साथ अटैच था वो उसके निकलने के बाद भी एक्टिविटी होना चाहिए था. सो वही कॉम्बिनेशन जो था अच्छा, हाँ, correct. ऑफ द नहीं हुई थी. पोल्टरगाइस्ट, A, B और C तीनों भी साथ में है तो हो रहा है. करेक्ट तो घर में इश्यू रहेगा कुछ तो. एंड मैं तो बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में आपको पैटर्न मिल जाए, देयर इज नथिंग पैरानॉर्मल. पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैन नॉट हैव अ पैटर्न वो पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहे हैं हम. हर जगह पे है. पैटर्न नहीं हो सकता है. राइट I think that's it guys. I hope आपको अच्छा लगा. ना थैंक यू सो मच गाइज. जो लोग Spotify पे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी टू सी कि आप लोग इतना एक्टिव हो इवन ऑन Spotify. थैंक यू सो मच. एंड दिस इज Ghost Encounters Unfiltered podcast. There will be more podcasts coming next weekend as well. Until then, take care. Bye bye. This is Sarbajit signing off. पूजा signing off. Savya signing off. Bye bye and good night, good morning and whatever. Bye bye.